And welcome to Master of English. पिले आमे गतकाली इंग्लिश ग्रामर रो जो मॉडल्स अच्छी मॉडल वर्ब एक्चुअली वर्ब विषय आमे पढ़ुतले आमे ऑलरेडी वुड रो व्यवहार पर्यंत पढ़ीचे आउ जो बाकी सब मॉडल्स रहिला से बाकी सब मॉडल्स रो व्यवहार विषय रे आज आमे एई क्लास रे पढ़िबा. So the next model that to be studied by the students and should be known to the students is what is should रो व्यवहार usage of should को केस रे व्यवहार हुए नहीं. what are the usage of should को in which condition we use should, what are the conditions that are necessary to use should, and what are the sequence and situation for that we use should. Let us see. So what happens, the modal should is used in the following grounds, like first one is to give advice, opinion and suggestion. First one is to give advice, opinion and suggestion. Advice कहले हम जानी जे समस्त उपदेश उपदेश, ओपिनियन कहले मतामत, सजेशन कहले भी मतामत. So these are the cases in which we use should ता व्यवहार हुए. आउ should आमे समस्त जानी थिबा उचितार्थ बोधक शब्द बोली भी ताकू कहंती ओडिया रे. तो प्रथम जिनस जेमती फॉर एग्जांपल आमे देखिबा उदाहरण जदि आमे देखिबा जेमती ही शुड बी ए गुड स्टूडेंट्स. लुक एट दिस, ही शुड बी ए गुड स्टूडेंट्स. अरे से गोटे भल छुआ भल माने पाठ पढ़ा कथा भल छात्र हवा कथा से भाई आ गोटे जदि आमे देखिबा यू शुड बी ए साइंटिस्ट. हाँ, यू शुड बी ए साइंटिस्ट. एटी कोन दिस इज व्हाट सजेशन, this is suggestion, this is advice. Yes na, in this condition we use should. Okay, first one is for advice, opinion, suggestion. Let us see the second condition. Second condition is what? Second condition is to express conditional clause. Kona? To express conditional clause. Second one is to express conditional clause. CONDITIONALCLAUSE. Conditional clause. I mean, all the if clause in English. जितने if clause अच्छी if clause are called the conditional clause. English रे if clause को conditional clause बोली क्लास है. In yes, ठीक है सी if clause. जमती if I were a king, I must have lots of queen, many queens. बहुत सारा रानी था अंते मोर जो मुझे राजा ही था अंते. तो से बोलिया. To express conditional clause, जेमती should we study hard, we shall pass the exam. Look at this. Should we study hard, we shall pass the exam. जदि आमे भलो परिश्रम करिवा, should we study hard, we can use should at the beginning of the sentence. Should we study hard, we will pass the exam. This is the condition. Number three is to talk about probability. To talk about probability. Number 3 is what? To talk about probability. संभावना व्यक्त करिवा पाए. To talk about probability. Probability व्यक्त करिवा पाए भी हमें कौन व्यवहार करथाउ? Yes, should ता व्यवहार करथाउ. जेमिति he should be at home now. हम गेस करी के कहबा he should be at home now. As per the situation we can say that he should be at home. वर्तमान एई समय रे से घरे ही थिबा कथा नहीं. So probability, this is what we call probability. Then number 4, to express necessity, duty and obligation. This is the vital point of should. To express, number 4, to express what? Necessity, then duty and obligation. Obligation, OBLIGATION. Obligation. To express necessity कहले कौन बोले आवश्यकता जहाँ कहूँ आम necessity, duty कहले कर्तव्य and obligation कौन चीज को मानिबार जो नियम श्रृंखला थाए
ताको आम कहवा सो टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन वी यूज व्हाट द मॉडल शुडटा व्यवहार करते जमीती यू शुड यू शुड टू डू द लेसन यू शुड टू डू द लेसन तुमको ये लेसनटा जमीती हेले करिवार अच्छी एट एनी कंडीशन बिकॉज दिस इज योर this is necessary for you. Then number B, you should help the poor. You should help the poor. गरीब मान को तमे सहाय्य करबा दरकार. That's why the God has given you property. भगवान सेहि पई तुमको धनी करके रखि जंदे. You should help the poor. If we'll go for the next example, you can say, they should obey the laws. They should obey the laws. सेमाने नियम मानिबा आवश्यकता अछि. Then we should respect our teachers. We should respect our teachers. आमे आम शिक्षक मान को सम्मान देवा दरकार. Yes or no? Then rule number 5. This is rule number 4. Let us see rule number 5. 5 number rule कौन कहे? To express request and polite form of want. To express request and what? Polite form of want. Polite form of want. To express request अनुरोध व्यक्त करिबा पई and polite form of want जेमिति माने मु कहिबा को चाहूची चाहिबा अर्थ रे व्यवहार होबो. So look at this. What happens? You should like to we should like you to teach us. We should like you teach us. आपण आमको पढ़ाइबा दरकार अछि. Next you can go for it. I should like to say that he has not committed this mistake. He has not committed. माने कहि पारे जे से ए भलिया भूल करी नथिबो. Rule number 6, to express wish or desire. To express wish or desire. To express wish or desire. इच्छा आग्रह विश डिजायर इच्छा आग्रह व्यक्त करबा पई जेमती आई शुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. आई शुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. मु जने डॉक्टर हबा पई चाहूची. आई शुड दिस इज माय विश. आई शुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. देन ही शुड लाइक टू बी ए प्रोफेसर. से जने प्रोफेसर अध्यापक हबा पई चाहूची. ही शुड लाइक टू बी ए प्रोफेसर. नहीं. So these are the example where we use should for wish and desire. Rule number 7 कौन कहे? Rule number 7 कहे to express surprise. Rule number 7 कहे to express surprise. आश्चर्य व्यक्त करिबा पई. To express surprise we use also should. It is very surprising that Roger Federer should lose the match. It is very surprising that India should lose the match. भारत तो साउथ अफ्रीका ठारो हारी गला. It was surprising. Rule number 8. 8 नंबर नियम कौन कहे? To express supposition or improbable action. Rule number 8 कौन कहे? To express supposition and improbable action. Improbable action पाई supposition और improbable action पाई व्यवहार हुए. Improbable action और supposition पाई भी व्यवहार हुए. जेमती should we work hard? We'll pass the exam. Conditional clause जेमती व्यवहार करू छे हमें. Should we work hard? We'll pass the exam. Okay. So this is what? This is the uses or usage of, you can say, should. Let us go to the uses of could. वर्तमान देखिबा could रा व्यवहार. Could usage of could. आम समस्ते जानी could को बहुत लोग कहते could टा होची past form of can, but it is not the past form of can. It is the strong form of can. That is called strong form of can. In one case only, in direct and indirect speech or in narration change, it is used as the past form of can. This is the main thing we must know. Okay. So could, when we use could केतबेले व्यवहार करिबा में. प्रथम जिनस हला to express past ability. First rule, to express past ability. कौन? Past ability. अतीत रे गोटे जिनस मु करि पारुथिली.
वर्तमान मु करि पारू नाही इन दैट कंडीशन यू आर टू यूज कुड व्यवहार करिबा आमे सो फॉर एग्जांपल आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस मु पांचटा भाषा कहि पारू थिली इट वाज माय एबिलिटी इन द पास्ट देन ही कुड study 8 hours at his school career he could study 8 hours at his school career मु जेतबे 10 रे पढुथली मु 8 घंटा परिश्रम करूथली but now it's not continuing getting me so to express past ability we use could the second rule is to express possibility second thing to express possibility संभावना व्यक्त करिबा पाई to express possibility we use what could जेमिति the chief guest could come here at any time the chief guest could come here at any time chief guest कोनो से भी समय आसी पारंती तापरे your suggestion could be reasonable तम सजेशन रे जुक्ति अछि yes your suggestion can be accepted because it is reasonable rule number 3 3 नंबर रूल कोन कहे पिले to express polite request to express polite request rule number 3 to express polite request भद्र भावे अनुरोध करिवा पाई टू polite request so politely request करिवा पाई हमें व्यवहार करथौ कोन could we use could you give your book please look at this could you give your book please दया करी मते आपनकर बही देई परिबे की could you give your book please could you pass the salt please आमे जेम माने डाइनिंग टेबल रे बसछे खाइबा पई बसछे लूण दरकार पड़ला could you pass the salt please salt टा टिके दबो के मते could you pass the chili please like this so polite request for polite request we use could आउ कोन number 4 to express feeling of impatience अधैर्य to express number 4 to express the feeling of impatience कहले कोन पिले अधैर्य impatience the feeling of impatience अधैर्य व्यक्त करिवा पे जेमति what could I do now oh god what could I do now वर्तमान मु कोन करिबी नहीं like how could it happen या केमति घटी पारे how could it happen with me मो सहित है केमति घटी पारे so this is what feeling of impatience अधैर्य माने जतबेले हमें धैर्यच्युत घटिबा हमर सही समय जतबेले हमें जो सेंटेंस गुडी का व्यवहार करछे सही समय हमें व्यवहार करिबा नंबर 5 रूल नंबर 5 कोन टू एक्सप्रेस परमिशन व्यक्त अनुमति दबा पाई 5 रे होची 5 हला टू एक्सप्रेस परमिशन अनुमति दवा पाए टू एक्सप्रेस परमिशन वी यूज व्हाट कुड टा व्यवहार होता है जेमते यू कैन से कुड आई गो होम नाउ शा कुड आई गो होम नाउ मो वर्तमान जाई परिबी के कुड आई रीड द बुक बहिटा मो पढ़ी परिबी के सो इफ यू विल गिव मी परमिशन आई कुड रीड द बुक अपन यदि परमिशन देबे मो बहिटा पढ़ीबी दिस इज व्हाट द यूजेस ऑफ कुड रो व्यवहार वर्तमान पिले हम टिके जीवा आगु तापर अछि यूजेस ऑफ माइट रो व्यवहार माइट केतबेले व्यवहार होबो देखिबा यूजेस ऑफ माइट यूसेज ऑफ माइट रो व्यवहार हम जानि जे समस्ते माइट टाको मे रो पास्ट टेंस बोली कुहा जा but it is not exactly it is the strong form of may is called might and only it is considered as the past tense while changing direct into indirect speech this is considered the past form of may remember this because modal verb has no past form remember so what happens the modal might is used in the following condition what are those conditions let us see to express probability and possibility first condition is to express probability what probability and possibility and probability संभावना और संभावित जो हमें कहे to express probability
एंड पॉसिबिलिटी लाइक ही माइट कम हियर टुमोरो से आसंता काली आसी पारंती आवर एग्जाम माइट हेल्ड इन एप्रिल आम परीक्षा मार्च रे एप्रिल रे हबो मार्च रे हबो नै ओके से भलिया नंबर बी द टीचर माइट टीच द इंग्लिश टुमोरो टीचर माइट टीच द इंग्लिश टुमोरो आम टीचर आसंता काली आमको कौन पढ़ेबे इंग्लिश पढ़ेबे दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी रूल नंबर 2 कौन पिले टू एक्सप्रेस आर सीक परमिशन टू express and seek permission to express and seek permission दबा पाई permission मागिबा पाई permission दबा पाई permission मागिबा पाई कौन व्यवहार होता है might व्यवहार होता है for example कौन बोले you might take my text if you want you might take my text if you want तुम जदि चाहूच मो बही नहीं पारिबो might I go home now वर्तमान मो घर को जाई पारिबी की might I ask your name might I ask your name मु तुमको तुम ना पचारी पारे की so this is what to express and seek permission number 3 to express future condition number 3 to express future condition भविष्यतर शर्त व्यक्त करिबा पाए फ्यूचर कंडीशन व्यक्त करिबा पाए हमें व्यवहार करि थाओ फॉर if you work hard he might get the first class future condition if you work hard से यदि बहुत माने कठिन परिश्रम करे if you work hard he might get the first class से first class पाइबो if the Indian players play well they might win the ICC World Cup भारतीय खेलाड़ी माने जदि भलो खेलंती से माने कोन करि परिबे से माने ICC World Cup जीतिबे then to express purpose number 4 to express purpose उद्देश्य व्यक्त करिबा पाए to express purpose उद्देश्य व्यक्त करिबा पाए भी might ता व्यवहार हेई थाए so what is there then to express purpose we send an application so that he might grant it we send an application that he might grant it आमे माने गोटे एप्लिकेशन दवा से माने ताकू मंजूर करि पारंती they run fast so that they might catch the bus से माने जोरे दौड़ुचंती जा फल से माने कोन करि पारबे माने बस टाकू कैच करि पार देयर इज ए पर्पज गोटे पर्पज अछि उद्देश्य नै कि आमे करूचे देन रूल नंबर 5 टू एक्सप्रेस गुड विशेस to express good wishes rule number 5 5 number नियम कोन to express good wishes माने जन को जेतो विश करू छामे in this condition we can use to express good wishes my father wished that I might win this match मो बापा मते आशीर्वाद करिसंती मो बापा चाहू जंती जे मु मैच टा जीतिबे मु जीति पारिबी से मते कहिसंती ऑलरेडी द टीचर विश्ड दैट ही माइट गेट द फर्स्ट क्लास आम शिक्षक कहिसंती जे से फर्स्ट क्लास पाइबो रूल नंबर 6 टू एक्सप्रेस a degree of dissatisfaction or reproach rule number 6 to express what a degree of dissatisfaction satisfaction or reproach reproach approach reproach कोन सेंस मने प्रवर्तैबा मना करिबा ए केस रे so to express a degree of dissatisfaction or you might pay a little more attention to your appearance you might pay a little more attention to your appearance तमे जो बेसभूषा पिंदुचो आ टिके भलो ड्रेस पिंदला होंदानी this is what we call dissatisfaction नहीं so rule number 7 might is also used with the perfect infinitive आउ को थरे बिले rule number 7 it use with it is used with perfect infinitive सहित भी
व्यवहार ही थाए जेमती दे माइट गो होम विथ हिज फादर they might go home with his father. Then why did you drive so scary? You might have run into the lamp post. Might plus have plus bhitri. This is what the perfect. Might plus have plus bhitri. This is called your perfect infinitive. This is called what? Perfect infinitive. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯିବା ଟିକେ ଅଟୁ ଆଉ ସୁଡ୍. Let us see ଅଟୁ and sued. Attu and should. Attu and should. Okay, let us see. So to express strong probability, attu is used to express strong probability. Modal should jagare attu ketebele byavahar haba if there is strong probability. जदि strong probability अछि ताहले से जगह should जगह हमें attu लगेइबा जेमति it attu rain. It may rain जगह it attu rain आमे माने कहि परिबा if there is strong probability हम आकाश रे कला मेघ देखिलोनी बसा टिपिटा पर आरंभ हैलानी so you can guess and so strong probability there to express moral duty or obligation आउ कोन to express moral duty or obligation rule number 2 मो लेखु नै to express moral duty and obligation कोन जेमती we ought to obey our parents we should obey our parents आमे जेमती कहू जे सेही जगह रे we can use we ought to obey our parents आमे निश्चित भाबे हम बापा मां को सम्मान देबा दरकार we ought to respect our teachers yes our teachers deserve respect that's why we must obey our teacher so we ought to follow the great ancestor हमर पूर्व पुरुष मानक कथा को आमे फॉलो करिवा दरकार से माने जहा करथले ताको आमे फॉलो करिवा कथा रूल नंबर 3 कोन 3 कहू टू एक्सप्रेस desirability and wish desirability एवं wish पाई मध्ये ought to व्यवहार हेता बिले I ought to help you मु तुमको निश्चित भाबे हेल्प करबी मोर इच्छा अछि I am interested he ought to donate his eyes is going to donate his eyes so this is his wish yes or no rule number 4 कोन बिले 4 होची to express advice उपदेश दवा पाई कोन कोई उपदेश दवा पाई यू माइट गो गेट अप अर्ली मॉर्निंग सकाळ ठीक बेगी उठुनु पढ़ा पढ़ी करि परिबो नहीं यू माइट गेट अप अर्ली लाइक दिस यू कैन गो रूल नंबर 5 कोन टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करिबा पाई टू एक्सप्रेस probability कहले कोन बिले he ought to be at home now he should be at home now he ought to be at home now जदि should लगौ छै हमें एटी कम चांसेस अछि बट इफ वी आर यूजिंग ought हमें जदि ought व्यवहार करछे देयर आर 99% chances are there we must be there then to express necessity and duty ought to कोन पे व्यवहार हेतै to express necessity and duty necessity कहले कर्तव्य परायणता माने आवश्यकता एवं ड्यूटी कहले कर्तव्य परायणता एथि पई भी व्यवहार हेते कोन यू ought to do the lessons तुम पाठ पढिबा दरकार यू ought to do the lesson छी भलिया वर्तमान देखिया फिर यूजेस ऑफ मस्ट आज सारी बार अछि बहुत सारा अछि एबे भी ओके मस्ट पर मु सार देबी क्लास टा बिले हैं ओके सो मस्ट यूजेस ऑफ मस्ट केते बेले व्यवहार हबो एटा थिला माइट वर्तमान जीवा मस्ट पाखुकु तो मस्ट केते बेले व्यवहार हबो मस्ट लुक एट दिस मस्ट यूजेस ऑफ मस्ट टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन फोर्थ थिंग one is to express obligation कौन जिनस को मानिबा रूल को मानिबा जेमती हैं सो हियर आई मस्ट गो नाउ देयर वर्तमान मु निश्चित भाबे सेठी जीवा कथा we must do our duty आमे समस्त काम करिवा कथा you must obey your parents तमे निश्चित भाबे तुम बापा मां को माने मानिबा कथा so student must obey their teachers पिला माने तांके टीचर मान को मानिबा कथा this is what what probabilities you can say obligation this is what obligation हला एक नंबर दुई नंबर कोन to express necessity to express दुई नंबर होची to express नेसेसिटी आवश्यकता व्यक्त करिबा पाई नेसेसिटी व्यक्त करिबा पाई हम व्यवहार करबा यू मस्ट स्लीप 6 आवर्स एट नाइट राति रे कम से कम 6 घंटा एट लीस्ट 6 आवर्स सोइबा दरकार यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स निश्चित भाबे भलो मार्क पाइबा पाई परिश्रम करिबा आवश्यकता रहिछि रूल 3 नंबर रूल कोन टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी 3 कहला टू एक्सप्रेस
पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करबा पाए टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करबा पाए जेमिति ही मस्ट बी ए डॉक्टर से निश्चित भाव डॉक्टर हम तार पाठ पढ़ा देखिले जना पड़ुची ही मस्ट बी ए डॉक्टर दे मस्ट बी हंग्री से मुह देखिले जना पड़ुची से निश्चित भाव भोकिला दिए खाई न सका रूल नंबर 4 टू एक्सप्रेस डेटरमिनेशन दृढ़ निष्ठा कर्तव्य निष्ठा जहाँ कहवा आम टू एक्सप्रेस डेटरमिनेशन 4 टू एक्सप्रेस डेटरमिनेशन व्यक्त करने दृढ़ निष्ठा व्यवहार करने आम व्यवहार करवा सो व्हाट हैपेंस आई मस्ट फिनिश दिस चैप्टर टुडे आज जमती हेले मु एई चैप्टरटा सारिबी आई मस्ट फिनिश दिस चैप्टर टुडे I must get the first class in annual exam. I must get the first class in annual exam. Annual exam रे जमती हेले मु first class 5 ही. नंबर 5 है to express prohibition मना करिबा पाए हैं to express prohibition 5 है to express prohibition मना करिबा क्षेत्र रे हमें व्यवहार करिया to express prohibition कहले कोन you mustn't smoke here. बाबू ये दिस अ पब्लिक प्लेस यू मस्टंट स्मोक तमें स्मोक करो नहीं यू मस्टंट गो देयर तमें सेठी जीवा कथा नुह बिकॉज दैट इज प्रोहिबिटेड एरिया ओके नेक्स्ट रूल नंबर 6 टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ निश्चितता एवं विश्वास व्यक्त करबा पई मध्य कोन व्यवहार होता है मस्ट व्यवहार होता है लास्ट रूल व्हाट इज इट to express certainty or belief certainty so to express certainty or belief विश्वास certainty or belief एथि पई भी व्यवहार होता है पहले जमती he must have engaged somewhere मोर विश्वास अच्छी से कोठी ना कोठी एंगेज ही जाइए ही मस्ट हैव एंगेज समवेयर मिस्टर मिश्रा मस्ट बी द चेयरपर्सन इन दिस एसोसिएशन से निश्चित भाव चेयरपर्सन हवा कथा रूल नंबर 7 पिले मॉडल आउ जो रहिला डेयर नीड यही सब सब ऊपर मु आलोचना करछि करू नहीं आज सारिबा ए क्लास को दुईटा क्लास रे मॉडल को सारिबा में सो रूल नंबर 7 कोन कहे टू एक्सप्रेस और ड्रॉ ए कंक्लूजन टू एक्सप्रेस और ड्रॉ ए कंक्लूजन गोटे कंक्लूजन ड्रॉ करने कंक्लूजन कहले कौन पहले इति कथा बा शेष कथा सो कंक्लूजन ड्रॉ कर यू मस्ट बी जोकिंग जोक दिस इज जोकिंग यू मस्ट बी जोकिंग मिछ कहूँ तुम सो द न्यूज पेपर्स दे आर जोकिंग टू द स्टूडेंट्स दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मार्च पेपर मानकर जो मार्च रे एग्जाम हो बोली बाहर देयर इज नो प्रॉपर ग्राउंड दैट दे कैन टेल लाइक दिस सो what is it to express or draw a conclusion so this is the class that's all for the day see you in the next class tomorrow grammar ro आउ गोटे फंडा आनी की आसंते कले आउ गोटे क्लास करबा आउ गोटे नुवा टॉपिक रे क्लास करबा आर्टिकल ऊपर करबा न टेंस ऊपर करबा न भर पैटर्न ऊपर करबा जहा भी करबा आसंते कले आमे कथा हेबा see you there आउ एग्जाम बाबद रे मु अपडेट देबी तुमको चिंता करो नहीं आई विल गिव यू अपडेट ओके बाय बाय